Good afternoon, one and all. Today we are here for a reason, and on this special occasion, we have arranged a webinar on the topic of how to develop a startup idea and raise fund. So, before moving to the talk, let me introduce the speaker first, Mr. Akash Kurapa, CEO of Digital Space Booking Private Limited, means Smart Warehouse. He has vast experience and knowledge in this field. So I welcome Dr. S.S. Suthar, Head of the Department of Agriculture and Engineering, Parul Institute of Technology, Parul University. I welcome the PU webinar, entire PU webinar team on this occasion. So let's we hear from the expert. So I would like to invite Mr. Akash Kurapa to deliver this expert speech on the topic. Thank you, Divyang, for inviting me. Yeah. So, yes, let's start the presentation. Are you able to see my presentation, Divyang? Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Okay. So let's begin. So our startup is Smart Warehouse. So first, I will tell you about ourselves, what we are and how we started. So we are Smart Warehouse. We are supported by Indian Council of Agriculture Research, Tata Foundation, Digital Impact Square, and Smart City Bhopal. That's called BNest. So what we are doing? So our firm is doing in a post service solution in agriculture domain in which we provide a digital booking of warehouses, marketplace, warehouse management system to get stakeholders fair price and fair storage for their community. Our mission is to change the total agri to make it more effective and efficient. So let's begin the presentation. So many of us want to become an entrepreneur. Why we want to become an entrepreneur? Number one, millions because they don't want a boss. सब अपने में अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं और सेकंड इज दैट दे वांट टू दे pursue their passions and all. So what kind of friends an entrepreneur should be have to start their own business, to start their own startup? First, they have calculated logical skills, motivation. Always he has to be a focused, confident enough. Risk-taking capability should be have. A strong work ethic, creative, innovative, patience, perseverance, making connection, versatile. So these are some of the trends should be an entrepreneur should be have. And this is an entrepreneur journey. It's not a day one and day two journey that you will become a you have started yesterday and today you will become a successful person. It's not a that easy. It's a long marathon, and you have to face lots of difficulties, lots of mistakes you will do. But by the way, you learn all the things. You will come over from the mistakes and pursue your passion, and one day you will definitely become a successful person. So it's an rate form. It's one of the favorite quote he has mentioned is that starting companies like it's like jumping off a cliff and assembling the plane on the way down. So it's a very risky job, and if you want to follow your passion, you have to take a risk. That's it. So a day in the entrepreneur life. So many entrepreneurs, just like me, also I faced lots of ups and downs in a day, and in a challenges we have faced related to our funding, related to our team building, related to our skills, related to our managing the clients and all. So if so, you have means you have to face lots of struggles and all, but at the end of the day, when we see ourselves in the mirror, we will again smile and go to sleep because we are changing the society. So the fate that we have is very great. सो हम जितने भी बी स्कूल्स में जाते हैं सब ये जाते हैं सब बोलते हैं बी प्लान्स एंड ऑल वी हैव टू मेक बी प्लान एंड ऑल बट वी आर दे आर नॉट explaining how to identify the problems in India and all, how we observe the things, how to find out the problem and all. So सबसे पहले आती है प्रॉब्लम कैसे हम आइडेंटिफाई करें. So first thing is that observation, the second is to define the problem, and the third is the justify the problem. So let's move on how to observe the things. So observation, if we identify the problem, we have to first have the observation skills. उसमें ओपन एंड लाइक माइंडेड पर्सन होना. सेकंड इज जो एनालिस्ट कर रहे हो ऑब्जर्वेशन से वो राइट डाउन करो या रिकॉर्ड करो ऑन पेपर या किसी भी आप मोबाइल में रिकॉर्ड करो, जो भी करो, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो पूरे लाइफ में पूरे दिन में
या पूरे जो आप कोई से भी सर्कमस्टेंस है, कोई सी वर्क प्लेस में हो आप, जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स इन अ वेरी स्क्रूटनी वे। आफ्टर दैट डिफाइन द प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है या दूसरे की प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द जो अब यंग जनरेशन है, जो मिलियनर्स हैं हम लोग, हम ज़्यादा आईटी सेक्टर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया और ये आईटी सेक्टर इतना बढ़ रहा है। वी आर नॉट इन अ ओल्ड फील्ड्स, जस्ट थिंक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एनी just banking or any agriculture sector. So we have to do lots of work if we're solving the other kind of other person problem. But if we're solving our problem, so we will grow fast. And this, but the advantage of solving the other person problem is that we will scale up easily. But in the self user, you have, definitely you get the chance that you can use justify कर लोगे, verify कर लोगे problem क्या है, खुद ही यूजर हो, खुद ही टेस्टिंग कर लोगे उसकी। बट if you solving the other person problem, so you have to replace yourself with the other person also. So continue, obsess about the problem, not the solution. मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में यही आता है, हमारे भी माइंडसेट में यही आता है कि मेरा आइडिया है सबसे बेस्ट आइडिया, दैट्स इट। मैं अपने आइडिया पे है, मेरा माइंड में बना लिया कि मेरा बहुत अच्छा आइडिया, ये मेरा मार्केट में चलेगा ही, हम उसी पे ही परसेप्शन बना लेते हैं। परसेप्शन बना के उसमें बिलीव फेथ करने लग जाते हैं, उस पर वर्क करने लग जाते हैं अपने स्किल सेट से। लेकिन इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस, दैट्स वाई मेनी ऑफ द स्टार्टअप फेल इन द अर्ली जर्नी ऑफ देयर लाइफ। So obsess about the problem, what actually the customer need, and I need to identify the customer problem first. Write down the problem that I have mentioned on the paper and all, and identify the problem. What is the problem? How did you discover the problem? When did the problem start, and how long has this problem been going? Just take an example of Zomato and Swiggy. तो उन लोगों के जो फाउंडर्स थे उनने भी यही किया कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। उन्होंने ये देखी कि मैं वर्क प्लेस पे हूँ, मुझे बार बार जाना पड़ेगा, मुझे रेस्टोरेंट से, उससे अच्छा तो मैं घर बैठे ही मुझे कुछ चीज़ मिल जाए। तो मैं लॉट्स ऑफ कैटलॉग दे सकता हूँ, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स क्या ऑफर कर सकते हैं वो देख सकते हैं, ग्रेट प्राइस और डील्स में कर। तो दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दे हैव रिटन एंड डिस्कवर दैट प्रॉब्लम। व्हेन डिड द प्रॉब्लम स्टार्ट एंड हाउ हैज दिस प्रॉब्लम हैज बीन गोइंग ऑन। जब हम क्रेविंग होती है फूड की या फिर हंग्री होते हैं, हंग्रीनेस, तो उन्होंने भी यही सोचा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हम लोगों ने, तो इस पर कब से हो रही है, जब से मुझे भूख लग रही है, जब मुझे कुछ खाने की क्रेविंग लग रही है, या फिर मैं कहीं पे बाहर जा नहीं पा रहा कि मेरा अगले 1 घंटे में मीटिंग है मेरी। तो यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स इन द पेपर and then a market research. Do as much you can do market research. Do primary research, secondary research in net and all. Because without the market research, you cannot identify the problem in a much scale way. Make the market, make user persona. After the finding the problem, make the user persona affinity cluster empty mapping. So I will give the example of our startup that what we have done. So we have done, we have go to different, we have make the questionnaire. We went to different stakeholders of warehouses, traders, farmers, and all. We are making notes, and we are also doing the Google forum and all. So we write all the things on a day while going there and researching all the things. And after that, at the end of the day, we're clustering all the things, making the user persona of that person, empathy map, what the government think about the agriculture sector in the warehousing sector, what the mandi person think about the warehousing sector and all. So cluster all the things in a one platform. ये बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। जस्ट यू हैव टू गो आउट, रिसर्च द थिंग्स एंड जस्ट पुट एट द एंड ऑफ द, जस्ट put all the things in the templates now. So you will identify and clustering all the things, the loopholes in the system, क्या क्या loopholes है सिस्टम में, क्या क्या टेक्नोलॉजी में हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्या इमोशंस क्या है फार्मर्स के, ट्रेडर्स के, क्या फंक्शनैलिटी क्या है उन लोगों की। तो एट द एंड क्लस्टरिंग करो क्वेश्चंस की जो आपने मार्केट रिसर्च की है, प्राइमरी सेकेंडरी। उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करो कि यस आई हैव आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड विथ माई स्किल सेट आई विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपके पास स्किल सेट है उसकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो आप वो सॉल्व कर लोगे। अगर वो स्किल सेट नहीं है, तो यू हैव टू लर्न दैट स्किल, और यू हैव टू हायर समवन एल्स, और यू हैव टू मेक टीम पार्टनर्स एंड ऑल। टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी कि मेरे पास अभी टेक
टेकी गाय हूँ मैं अगर, लेकिन मुझे मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, तो आई हैव टू हायर द मैनेजमेंट और आई हैव टू लर्न दैट मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो फॉर दैट, एंड ऑल्सो the resources, how many resources you required for building a SaaS startup. You need a resources, just like an agri-tech startup, just we need the server, domain, and all the things. So we need a resources. So you have to also decide and write down the things, what kind of resources you need, and the financial management, how you manage the financial, because I know it's very tough to manage the finance when we are in a college and when we are in student field. So we are on that time we are also a student means. Uh, so I know that हमें तो 5-6 हज़ार रुपये मिलते थे monthly as a pocket money. So we have to save the pocket money that कहाँ हम need है. Bonds और desire कभी हमने अपनी लाइफ में नहीं किया क्योंकि हम एक मिशन पे थे कि that we have to solve this kind of problem. So we have to save that much money. So uh, so we will pursue our passion and expected a deadline to solve this problem. The most important thing is the deadline, because हम जब अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं हमें कोई रोकने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है, बिकॉज हम खुद ही उसके बॉस होते हैं, तो हमें कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होता। जैसे टीचर्स हमें बोलते हैं कि इस असाइनमेंट इस टाइम पे देना, इसमें कोई वो नहीं है। सो यू हैव टू एक्सपेक्टेड द डेडलाइंस कि हमें एक टाइम लिमिट सेट करनी है कि मुझे 1 साल या 2 साल में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दैट्स इट। प्रोडक्ट वैलिडेशन। हेलो हेलो guys, are you able to hear me? Yes, Akash. Okay. And after the solving and after identify the problem and the solution of your problem, then you will do product validation. So ये full step product validation होती है जिसमें आप proof of concept लेके आते हो, prototype लेके आते हो, MVP लेके आते हो, product market fit लेके आते हो। Proof of concept क्या होता है? A proof of concept is an exercise in which work is focused on determining whether an idea can be turned into reality. Just we have researched all the things, we have observed the things, and with our skill set, with the all the things, we have made a product, first product. So कुछ भी हो, आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए। जस्ट आई विल शो माय हमारा सबसे बेसिक HTML वेबसाइट जो सिर्फ आता था हमें जब व्हेन वी आर इन कॉलेज, दैट कि हमें बस यूजर को, स्टेक होल्डर्स को ये बताना है कि हमारा आइडिया एक्चुअली रियलिटी में आ चुका है, दैट व्हाट काइंड ऑफ यू मॉडिफिकेशन वी नीड मोर। सो आई विल शो सम वीडियो ऑफ दैट फर्स्ट proof of concept that we have made. That's it's a basic, just like a just dial, that you have to check in date, check in time, जैसे ओयो में जैसे होता है कि वेयर हाउस बुक करना है हम लोगों को, वेयर तो सर्च करो वेयर हाउस, बस उसकी इन्फॉर्मेशन ले लो, रेट ऑफ कम्युनिटीज क्या है, फैसिलिटीज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड हो रही है, दैट्स इट। हमने तो वीट का ये भी नहीं पता था, मैट्रिक टन, रुपीज, ये सब। सो but by the research we analyze and identify that what kind of mistake we have done and how we solve that kind of mistakes. And after the getting the feedbacks and suggestion from the stakeholders, again go out, make the proof of concept, वापस से उनसे फीडबैक लो, सजेशन लो कि सर अब क्या क्या हमें वो चेंजेस करना है। डेफिनेटली द स्टेक होल्डर्स एंड यूजर विल गिव यू एडवाइस एंड सजेशन। कोई भी आप एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने अच्छे हैं फार्मर्स एंड ऑल, that they will help you. Ask with your agriculture expert, professors and all, move around the field user and all and get the information. So we get around 10 feedback and suggestion। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो, फ्लेक्सिबल स्लॉट बुकिंग भी कर सकते हो वेयर हाउसेस की, SMS सर्विसेज, ट्रैकिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन मार्केट। सो दैट इज वेदर रिपोर्ट डाल दो, मंडी रेट डाल दो उस ऐप में, बहुत सारे सजेशन मिले ऐसे। बट वी नो दैट आवर कैपेबिलिटी, हम पूरी 10 की चीज़ 10 एक बार में नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए 10 चीज़ एक साथ, क्योंकि बहुत मेस्ड अप होता है और बहुत टाइम लगता है इसको परफेक्ट बनाने में। सो वी हैव आइडेंटिफाई क्या हम कोर फीचर क्या ज़्यादा यूज़र डिमांड कर रहे हैं और किस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें। तो आउट ऑफ 10 सजेशन, choose only 2 to 3 feature that you really want to work on in detail. Afterwards you can do whatever do, but first select the two priority and then make the prototype after making the priority.
Prototype is a sample. It's a test of what will eventually become a final product. So आपने proof of concept कर लिया, suggestion ले लिया उससे, sample ले लिया, then start making the prototype of your proof of concept. So then again, you make the prototype. Just we have did that. Get the again we went to feedback, get feedback from our stakeholders, users कि अब क्या क्या problem है सर. तो वो सर ने बोला यार तुमने बनाया तो अच्छा है लेकिन अब लॉन्ग है, टायरिंग प्रोसेस है और लेस इंटरेक्टिव यूआई है, सर्वर एक्ट्स वेरी स्लो, but how we will how we be able to book the warehouses and all. Then again we got frustrated and all the things. But I will suggest you that never frustrated about what the user say. आप ईगो पे मत रहे, मिस इंटरप्रिटेशन मत करिए कि मेरा आइडिया सबसे अच्छा है. आस्क यूजर ही आपको, बी लव विथ योर यूजर नॉट विथ योर प्रोडक्ट. हमेशा ये हमने भी यही किया, हमने भी यही मिस्टेक की थी कि हमने पहले प्रोडक्ट किया, हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, चेंज कर देंगे पूरी इंडिया को एग्रीटेक को. बट वी फॉरगेट दैट आवर एक्चुअल यूजर is our product. Not having proper data, misinterpreting the problem, team building, lack of patience, and lack of resources. This is the main problem that every startup failed, because it's a long journey, it's a marathon, it's not a sprint. So MVP, how you made the MVP from that proof of concept? So after asking all the feedback suggestion, and then you make the viable product of it. In another word, it's not packed with a dozen of cool feature, but only has the core functionality that user बुक कर रहा है कि नहीं वेयर हाउसेस, या फिर यूजर फूड एप्लीकेशन से फूड ऑर्डरिंग कर रहा है कि नहीं रेस्टोरेंट से. दैट्स इट. इट्स अ एमवीपी ऑफ. आफ्टर सेलेक्टिंग द एमवीपी, go again to the market, meet with new stakeholders, new existing users. सर आप कैसा सर प्रोडक्ट मिला. Then again they will suggest or say will okay अब अच्छा है, we will book, we will start booking with your app and all. So improve UI, then full step booking process. We just sort down our booking process, boost the server speed, and we launch our regional language and all. So after that, after getting the suggestion feedback, what you will do is that your product is ready for product market fit, and your product is ready to launch in the market. So product market fit describe a scenario in which a company target customers are buying, using, and telling other about the company product in number large enough to sustain that product growth and profitability. So that after the launching in the market, you will get some fun, you will get some profit from that. And then we have launched our product. Now after the many attempts and mistake that what we have done, and finally success, we have launched in a Play Store and Apple Store. So right now we are in MP and Chhattisgarh. So it's a full very long process. It's not a easy that you will get a success in a very short period of time. It will take time, but definitely if your product is market fit, then you will again easily scale up. So after that you can introduce your feature that what you have received in the first prototype, first proof of concept, and then you make the integration app with WMS. Again, you will find out the new opportunities, how, and then billing software and all. So the thing is that after product fit in the market, you can easily scale up. टाइम मुश्किल जब आता है जब मार्केट फिट से पहले होता है, जो प्रोटोटाइप या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की जर्नी होती है जब, क्योंकि उसमें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है
फिर अपने रिसोर्सेज कम रहते हैं, टीम छोड़ के चले जाती है बीच में, या फिर वापस आपको रीबिल्ड करना पड़ता है, आपको फाइनेंशियल की दिक्कत होती है, सब कुछ होता है. बट अगेन आई विल suggest you to never lose your hope. Again, if you're failing some side, but you have to believe in yourself at the end of that day. And therefore that you have to participate in competition challenges in all one. अगर आप एग्री सेक्टर के स्टार्टअप में हो तो आपको जितने भी एग्री सेक्टर के स्टार्टअप्स हो रहे हैं अभी, जितने भी कंपटीशन चैलेंजेस हो रहे हैं, सब में पार्टिसिपेट करना है. आप भले ही जीतो हारो, वो मैटर नहीं करता है. बस मैटर ये करता है आप उससे क्या सीख रहे हो, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो मिस्टेक्स, उस मिस्टेक्स को कैसे आप ओवरकम कर रहे हो. दैट्स इट. And second is incubator. Right now, government also write RKVVY, incubator in agri sector, in agriculture field. So आप वहाँ पे जा सकते हो. बहुत सारे अभी incubator अभी IRI का भी लॉन्च हुआ है, मैनेज का भी लॉन्च हुआ है. तो आप उधर जाओ, पार्टिसिपेट करो इंक्यूबेटर में, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कनेक्शंस रहते हैं, नेटवर्क्स रहते हैं, एंड वो अच्छे से आपको स्टेक होल्डर से मिलवा सकते हैं, ट्रायल्स प्रोडक्ट ट्रायल्स कर सकते हैं. एंड थर्ड इज द लिंक्डइन. अगर आपका चैलेंजेस में भी हार रहे हो, कंपटीशन में भी हार रहे हो, इंक्यूबेटर में भी नहीं सिलेक्ट हुआ है, फिर भी आप लिंक्डइन पे जाके एंजल इन्वेस्टर को, वीसी फर्म्स को जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उनको मेल कर दो. एटलीस्ट showcase your product to someone. Otherwise, if you're not giving your product to your user, then it's a no use. And this is, I will share the platform link, जिसमें अलग अलग स्टार्टअप कंपटीशन होते हैं, जस्ट लाइक बिट्स पिलानी में एपरेट, स्टार्टअप स्पार्क में 2.0, और स्टार्टअप इंडिया है जो बहुत सारे चैलेंजेस और ऑफर्स जो करता है, और लिंक्डइन है जिसमें आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स और सब अपने एक्सपर्ट से मिल सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो. सो दैट्स इट. इट्स माय फेवरेट कोट. You have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become. So, yeah, follow your intuition, follow your passion, and never give up. Thank you. Hello, Akash. Hi. So the student gave me some problem. Uh, Sometimes they found. So can I ask you questions? Yeah, Divya. So now your slide is over. Yeah. Means your presentation. Hmm. Okay. So they found the how can we handle the failure if we encounter some problem during our enterprise. So how can we handle the problem? First, when you fail or when you handle the problem, because when you are an entrepreneur, you have lots of pressure in your shoulders. Means you have to manage the clients, you have to manage your the team and all. सबसे अच्छा है, सबसे faith, believe in yourself. First of all, that why I have started this startup, this idea. That's it. When you have any kind of problems, just ask yourself. किसी ने तो मुझे बोला नहीं था कि ये कर लो. I have chosen myself. So Akash, can you give us some motivational points so that our young minds can motivate through listening? Okay. Yeah, we all see that the TVS aspirants, and I know that Divyan, you also seen. Yes, definitely. है ना, उसका कलेक्टर आता है, मीन्स कलेक्टर आता है, एक लास्ट में एक स्पीच अच्छे से बोली कि उनको एक मटका, एक ग्रुप को एक मटका बनाने के लिए बोलते हैं कि एक परफेक्ट आपको एक मटका बनाना है एक ग्रुप को, और एक दूसरे को बोलते हैं मॉडिफाई करके एक मटका बनाना है. तो वही है कि आपको मटका बनाना है, आपको बहुत सारे मटके फेल होंगे, वापस आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको, बार बार आपको उसमें काम करना पड़ेगा, गैप्स ढूंढने पड़ेंगे, मिस्टेक्स तो होगी, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, we do lots of mistakes. We have to learn the mistakes, overcome the mistakes, and just we have to not lose the faith and believe ourselves. If we lose our faith and believe in ourselves, na, definitely no one will help you. So वो भी यही था कि उन्हें जो ग्रुप जो दूसरा था उन्होंने अच्छे से फिर मटके बनाए, मॉडिफाई कर करके, और एक जो दूसरा ग्रुप था वो एक बस एक ही में रहेगा कि मुझे एक परफेक्ट मटका बनाना, वही सोचते रहेगा.
बनाने में टाइम वेस्ट कर दिया. सो इफ यू डू, बस जो आपका आइडिया है, बिगिन विथ योर स्टाइल, रिस्क लो, ग्राउंड वर्क करो. सक्सेस फेलियर तो चलता रहता है लाइफ में, बट Yes, that's definitely a motivational point. Now, another question our student said, the if in any enterprise or any business, the important thing is marketing, right? So how can we manage our marketing, or how can we advertise our product? So it's I think biggest problem, right? yeah, yeah. So how do you? My question is, how did you handle this kind of problem? So in the recent time, right now in the pandemic time, we have faced lots of difficulties because in the agriculture sector, no one in a social media platform and all, and we are on a lockdown and but if the product's very effective है, आपका प्रोडक्ट सही में आपने यूजर के हिसाब से बनाया है, तो वो वर्ड ऑफ माउथ से आराम से जाएगा. तो उसके लिए तो आपको चाहिए कि वर्ड ऑफ माउथ तो है ही, क्योंकि फार्मर एक ने ट्रेडर या फार्मर ने एफपीओस ने बुक किया वेयर हाउसेस को, या किसी भी आपने एक बुक की ऐप से फूड ऑर्डरिंग सर्विसेज, आप 10 लोगों को बोलोगे कि ये बहुत अच्छा फीचर है, कि ऐसा है, तो आपको बस यही है कि मेरी स्ट्रेटजी मार्केटिंग की यही रखनी चाहिए. अभी तो जब आप इनिशियल फेज में हो, जब आपके पास फंडिंग नहीं है, डू द सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑल राइट नाउ इफ यू आर बिल्डिंग अ एग्रीटेक स्टार्टअप एंड ऑल, या फिर आप कोई से एग्रीटेक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो मार्केट में, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी यही है कि आप सब लोग अभी उसी में ही हैं सर. हम भी वेबिनार और ये सब डिजिटली कर रहे हैं, वी आर नॉट. सो आई थिंक वी विल कनेक्ट ईच अदर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑफर्स और डील्स बस. Okay, that's great, Akash. Now, another question is, from where you get this idea to start up this digital means in the digital era, because nowadays the digital yoga, if we say in Gujarati, is currently in tradition. So from where you get this idea? I say that the observation. First, you analyze the things in your surrounding. So right now, when I was in college, I got this idea that मेरे को वेयर हाउसेस जाना था, मतलब मेरे इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम में. तो वहाँ पे देखा कि बहुत वही टेलीफोन दूर दूर से आ रहे हैं बीकानेर में ग्राउंड नट रखने के लिए वेयर हाउसेस में. वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि क्यों आ रहे हैं इतनी धूप में, गर्मी होती है बीकानेर में बहुत, तो क्यों आ रहे हैं, उनको रियल टाइम डेटा क्यों नहीं मिल रहा है स्पेस अवेबिलिटी का. देन आई सर्च ऑन द नेट कि कोई सी ऐसी इंफॉर्मेशन, लेकिन पता ये चला कि वेयर हाउसेस ही लिस्टेड नहीं है गूगल पे. कैसे फाइंड आउट करें? सो यू हैव टू फर्स्ट ओपन योर माइंड कि ये है प्रॉब्लम आ रही है, ओके यूजर को, फिर आप पूछो क्यों आ रही है सर, जाओ मार्केट में, बंक करो क्लासेस. आई विल नॉट सजेस्ट टू बंक द क्लास, बट यू हैव टू गो टू योर स्टेक होल्डर and all and ask the problem very well if you identify the problem. और आपका खुद की प्रॉब्लम है, खुद ही एक प्रॉब्लम फेस करो, सबसे अच्छी है वही है. जैसे रेड बस के जो फाउंडर थे, उसको भी बैंगलोर जाना था चेन्नई से. उनको यही थी कि मैं अगर किसी ब्रोकर को दे रहा हूँ, वो 100 रुपये कमीशन ले रहा है, तो वाई वी नॉट क्रिएट अ ऐप कि मुझे ही यूजर अच्छे से मिले, कि मैं ही खुद अपनी बुक टिकट कर पाऊँ बस की. तो खुद ही अगर यूजर हो या फिर दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो यू हैव टू रिप्लेस योरसेल्फ विद अदर और यूर. Okay, so Akash, can you explain us any success stories from where you get motivated to start your own business? Success stories. Yeah, I was lots of TEDx and all. I mostly in um, no entrepreneur journey. I listen all the trade and talk about Sunny Bansal, how the Sandeep Bansal and all they've started their Flipkart, Ola, and also I'm listening all the podcasts, YouTube and all. From there, I will gain the motivation and inspiration. तो आप जितने भी, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आप जर्नी वही आप सराउंड योरसेल्फ कर लोगे, क्योंकि आप वही एक फेज में रहते हो कि मैं बनना है एंटरप्रेन्योर. तो आप वही चीज देखते हो इंस्टेड ऑफ वाचिंग द वेब शोज एंड वेब सीरीज.
you will start watching the TED talks and all. Okay, so you started your own business in based on digital, right? Yeah. So how much percentage this digital business is effective? Okay. Now we all know that Gramophone and Ninja Card, Dehat, they all are coming in a digital where we are changing the society, agriculture society, and how if they are effectively working in this area. So I think the digital area is coming into the core sector just like agriculture sector, and we are transforming the agriculture sector with our technology. So I think the next 10 to 15 years we will use AI ML in the agriculture. Now right now we are also using the AI and the by prediction and all. So I think the technology is for the future. So we have to adopt now only. So now, what's your current plan, Akash, to expand your business or to start up your new business in this field? Have you decided or any ideas to expand or to develop new field? Yeah, we are working on AR right now. I will show Miss what is AR if I have a video of it. One question from my side. Yes, Akash sir. Kurappa. Actually, you know well, in seventh semester of the BTech Agriculture Engineering syllabus, there is 10-week training on student ready, means students entrepreneurship awareness program, Yes. student rural entrepreneurship awareness program. So the organization in which are we working? You have developed some actually startup and etc. So our student can join training at our organization. Yes, sir. Definitely, sir. We Then you please send the details. So from 1st June, I have to depute some student for some type of training. So we will include your name also. okay, sir. And in this pandemic condition, the training is online. But when the condition will be good, student will come to their place, your place, and they will remain in touch with you. Okay, sir. So our seventh semester is whole on the training base. Skill development training 1, skill development training 2, 10 week industrial training. Industrial attachment, the remaining 10 is actually student ready program. It's rural entrepreneurship awareness development unit. So these all are startup is related to rural entrepreneurship. Okay. So if you help us in this regard, then it is well achieved. Okay, sir. Definitely, I will. Okay. Sure. So, Divyang, I want to show some that what you have asked me. Yeah, sure, Akash. Uh, are you able to see my screen? Yes. Yet not, Akash. So we are working on AR right now. कि आप घर पे ही बैठ के पूरा वेयर हाउस देख सकते हैं. You can go out and see. Think you are able to see. So this is our. In this you have to open the application and कौन सा वेयर हाउस आपको चुनना है. Just go digital with them.
in which you can see the real time data of the warehouses कि उस जो कम्युनिटी रखी है warehouses में या जो भी चीज रखी है आप ऐप से रियल टाइम उस कम्युनिटी को देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ द 3D मॉडलिंग एंड ऑल. So yeah, this opportunity again, we went to different warehouses. We asked the stakeholders कि अब क्या प्रॉब्लम है सर. मीन्स आफ्टर द लॉन्चिंग द प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर वो अभी आ रहे थे कि वेयरहाउस क्रेडिबिलिटी कैसे. अब मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी वांट टू स्टोर देयर कम्युनिटी इन द वेयरहाउसेस जस्ट लाइक आईटीसी ब्रिटानिया पाल ने. अब to show us the real time data they can see and use our technology. So my बस यही है कि मतलब you have to go to the market, ask the user what they want, identify the problems, observe the things, and with your skill set work on that solution. That's it. Uh, right, Akash, that's good. So now recently student called me and they asked me to question you. So can I ask, Akash? Yeah, definitely. They question me both, in which the first one is the student told me that it's quite a difficult and complicated process to get a funding. So how can we make it feasible for us, or how can we make it easy for us? So can you suggest us? Okay, देखो funding it's not a issue. The issue is the patient related to that problem. Funding तो कहीं ना कहीं से आ सके because we also a student, we live like you as well कि funding नहीं है कैसे काम करेंगे. You have to manage yourself. हमने तो पॉकेट मनी बचा बचा के फिर सेविंग्स की फिर उसमें अपने स्टार्टअप्स में लगाया. JRF स्कॉलरशिप मिलती थी मेरे फ्रेंड्स को, उधर से स्कॉलरशिप ले लेके हमने फिर अपने बिजनेस में लगा दिया. देन वी हैव स्टार्टेड अप्लाइंग टू द डिफरेंट चैलेंजेस एंड कंपटीशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो जो भी फंडिंग के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द प्रोडक्ट, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाओ, देन गो टू द डिफरेंट कंपटीशन, चैलेंजेस, इंक्यूबेटर्स एंड एंजल इन्वेस्टर एंड ऑल. इंक्यूबेटर्स तो अब बहुत हो चुके हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च 932 करोड़ फॉर द इंक्यूबेटर्स एंड ऑल. जस्ट आप सर्च करो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाओ, जो मैंने अभी किया. बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वो चलते हैं कंपटीशन, उधर अप्लाई करो. और f6.com पूरे f6.com में पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंपटीशन है, पोलैंड में है, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, जहाँ पे भी एग्रीकल्चर के हो रहे हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, अपना आइडिया वहाँ पे शेयर कर सकते हो. इफ समवन लाइक योर आइडिया और योर प्रोडक्ट दे कैन इजीली टच विथ यू. बट ये है कि मतलब funding it's a second important thing. The first important thing is the problem that you're solving. Can you suggest us, Akash, any business idea if you have or if you had in your mind, so our young mind will get motivated thoroughly? How I can? It's a quite of a secret question, so I know you cannot share with us. Definitely. So I just changed my question. Yeah. So what is the difference between the franchises and any enterprise?
Franchisee means I didn't get. Franchises means we have ever seen that many franchises in our cities or in our villages. Like Domino's franchisee. Yeah, yeah, right. Huh? So Domino's and all these are of business. First, we have to identify what is business and what is entrepreneurship. It's- Entrepreneur is you're changing the society. Means you want to change the society. You identify the problem and then you solving the problem. In that business, you just selling out the mango ली और mango बेच दिए. मतलब वो नहीं है. आप वो मैंगो को बना के फिर मैंगो शेक बनाना entrepreneurship है. मैंगो को लेके मैंगो बेचना इट्स अ बिजनेस. सो ये फ्रेंचाइजी मॉडल ये सब एक बिजनेस है. इट्स नॉट अ स्टार्टअप. इट्स नॉट अ. तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको बिजनेसमैन बनना है कि एंटरप्रेन्योर. All right, means there is a big difference between any business or any entrepreneurship, right? या. Oh, good. एनी अदर क्वेश्चन? If anyone have any questions, then you can directly contact to the Akash Kurapa. You can ask if anyone have any questions. हाँ, you can share. I am sharing the email ID. Okay. You contact me anytime. Now Akash, now ये मेरा क्वेश्चन था कि अगर आप मतलब कितने अभी स्टाफ मेंबर हो एंड कितने आप एम्प्लॉय हो, कैन वी गेट अवेयर अबाउट दैट? Right now, we have 18 members in our team. Okay. So we are working day and night. एंड नाउ अभी आपका जो आइडिया है वो अभी आई थिंक एमपी एंड छत्तीसगढ़ के लिए, राइट? हाँ. एंड यू वुड लाइक टू एक्सपांड योर बिजनेस. Yeah, definitely. आई मींस आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या मींस यू वांट टू कवर मोर स्टेट, राइट? Yeah. Well, but the thing is that no, first we have to identify the demographic problem that actually the what kind of problems our traders are facing. हम ये मॉडल गुजरात में नहीं ला सकते बिकॉज देयर सम अदर सर्कमस्टेंसेस है. राजस्थान में नहीं ला सकते. वी हैव टू आइडेंटिफाई. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी that market research and all, and after the clustering the question and all, we'll make the solution of it. But क्योंकि हर मॉडल हर जगह चलता नहीं है. Oh, right. सबसे अच्छा है जस्ट आई वांट टू गिव यू एडवाइस. जस्ट गो आउट. जो भी सर ने बोला, जो भी हमें 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में होते हैं, हम लोग प्लेसमेंट और दूसरी फर्दर स्टडीज में लग जाते हैं. प्लेसमेंट लेना है या मुझे एमएससी एमटेक करने जाना है, तो वो जो भी उनका प्रोजेक्ट रहता है वो बस मार्क्स लाने के लिए, पास होने के लिए करते हैं हम लोग. तो वो सबसे गलती है कि हम प्रोजेक्ट को ही सीरियसली नहीं लेते हैं. अगर हम प्रोजेक्ट को सीरियसली लेने लग जाए और वहाँ पे रूरल मार्केट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने लगे, देन we are all a young generation. We can do what we want to do. But वही है कि हमें एक वो होना चाहिए करने को पैशन. Your actually session is very correct. Most of the students, after actually near to graduation, they search the job or they think about the higher study. No Yeah. one think about the to become an entrepreneur. Like you search one actually candidate. So we actually give some actually our 7th semester student to you. You assign some work in Gujarat. They will survey and provide you data. So on the basis you can make any digital model for Okay, sir. entrepreneurs. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Thank you. Your talk is very interesting and it is very useful to the students and our faculty also. Any questions? From the faculty? At present your office is at Bhopal, Yes, sir. We are in a smart city right now, Bhopal. smart city, right? How much it is far from CI Bhopal? Sir, right now CI Bhopal almost 10 kilometers, 10 to 15. Then you have to say. So you are very touched in the Center Institute of Agriculture Engineering. Huh? Yes, sir. At present, about 5 are selected for the Tractor Training and Testing Center, Budhi. Oh, So they are coming there
from the 1st June. Okay, definitely. I will sure meet with them also. So I will give you a reference. If they will get time, we will meet you. Okay, definitely. Any question? Then let us we'll end the meeting. You webinar, sir. Yeah, sir. I think the question will never going to be end. So, I will, can we conclude our webinar, sir? at that time asking this PU webinar thing. The thing, sir. Mic is on. Because, sir, my phone is continuously vibrating for the students. It's continuously a question to me. No, you continue. You take one or two good questions which are actually answerable. You won't maybe ask anything. Yeah, sure, sir. I will give Akash numbers to students so they can directly contact to the Akash. Okay, definitely. So I've shared my email ID to them. Yeah, definitely. then it is. I am so thankful as a HOD of Agriculture Engineering Department, Parul University. You have accepted our actually invitation and deliver a good talk on the smart city. And this is a good talk for useful talk for our students so much. I also thankful to all the faculty and PU webinar teams who had arranged today, actually within short time, two webinars from this department. And I also thankful our faculty, Divyang Nakum sir. He has actually changed the whole webinar part. Today, you are a first speaker from the industry, expert speaker. So we need actually expert speaker. So whatever our friend is also work in the different companies, kindly gives their email address and contact number so we can pursue them to deliver the expert talk. Yes. Jatin Thank you, Ramka sir. sir, Divesh Kumar, Divyang Kumar, Divyang, Yes, sir. Jatin sir, आप कॉल तो बोलो कि sir now we are winding this webinar. Yes, sir. So thank you very much, everyone. A special thanks to Akash Kurapa, who spent their valuable time to make this webinar more and more beautiful. I can definitely say that our young mind will get motivated by listening your webinar. Thank you. And I'm also thankful to the entire team of PU Webinar who made this webinar successfully. And at the end, last but not least, I am very much thankful to the students who joined from FB or Facebook Live. Without them, this could not be possible. So I'm thankful to everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, this is the end. Final. Left the meeting. Yes, Sami, Dara, Jare, he left. Yes, sir. We can let already. What thanks we done.